नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th NCERT. So once again, welcome to all my friends and let us start the video. Here is the chapter number 3rd, that is pair of linear equation in two variable. So dear, in this chapter, that is pair of linear equation in two variables, we will discuss graphical method. How can we solve a pair of linear equation, that is system of pair of linear equation by the graphical method. So here is a question for you. This is the question of exercise number 3.1 and the statement of the question is Aftab tells his daughters 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. If you present this situation as algebraically and graphically, therefore means यहाँ पे दो लोग हैं, एक आफ्ताब है और एक इसकी डॉटर है. उसने अपने डॉटर से कहा कि 7 ईयर्स पहले, 7 साल पहले मैं उसकी उम्र का 7 टाइम्स था. फिर उसने कहा आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 टाइम्स हो जाऊंगा. तो इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे करेंगे, आइए दोस्तों, लेट अस एंजॉय दिस वीडियो. So dear, first of all, let the present age. Okay, so present age Aftab, that is X years. Okay, X years. First of all, we will consider the Aftab age as 7 X years and his daughter's age as Y years. ओके, आफ्टर दैट व्हाट टू डू. दिस इज द प्रेजेंट एज. प्रेजेंट समय में दोनों का एज एक्स और वाई ईयर्स है और यही वैल्यू अब हमें फाइंड करना है. ठीक है. सो डियर, नाउ व्हाट टू डू. आफ्टर 7 years ago, we will discuss here about the situation 7 years ago. So this is 7 years ago. What will be discussed? Let us dear, your present age is 15 year. Then what about your age 7 years ago? 7 साल पहले आपकी उम्र कितनी रही होगी, बताएंगे? Yes, you are correct. Means 15 minus 7, that 8 year. तो इस समय प्रेजेंट एज जो आफ्ताब की है वो कितनी है, x years. तो 7 years पहले कितनी हो जाएगी? Yes, of course dear. It will be x plus x minus 7 years. And his daughter is also y minus 7 years. 7 साल पहले ये कंडीशन हो जाएगी. Okay dear, after this situation, according to the क्वेश्चन में अब आपसे क्या कहा गया है, ATQ. क्वेश्चन सेज दैट आफ्ताब एज दिस इक्वल टू 7 years 7 times and his daughter's age. So dear, you will put the value. This is the values x minus 7 and y minus 7. So you will get this is x minus 7 and equal to 7 into y minus 7. So after simplifying 7 into y,
you will multiply 7 to y and 7 to 7. So what you will get? 7y 49. So this is the value. After that you will transpose all the values to left side. So you will get x minus, and now transpose this 7 by to left side. So you will get minus 7y. And after that this 49 also to left side, this 49 to left side, so negative 49 will be converted into the positive, that is plus 49, and minus 7 you will write this same to same, so you write here minus 7. Now right hand side what is remaining? Nothing, so you will put 0. So you will get the finally this is x minus 7 by, and 49 minus 7 means 42, that is positive sign, 42 equal to 0, and let this is the equation number 1. Okay, after that again question says that after 3 years, after 3 years from now, तो हम क्या लिखेंगे? After 3 years. So this is the new condition for the question. After 3 years, what you will get? The आफ्ताब एज उस समय. So dear, आफ्टर 3 years, तो एक एग्जाम्पल फिर लेते हैं. आप अभी इस समय 15 साल के हैं, ठीक है? तो आफ्टर 3 years आपका एज कितना होगा? यस करेक्ट, 15 + 3 दैट इज 18. तो प्रेजेंट एज आफ्ताब का x ईयर है, और 3 years के बाद में कितना हो जाएगा दोस्तों? इट विल बी अगेन x + 3 years. And the daughter is also y + 3 years. So dear, again to the condition of the question says that Aftab is 3 times of her daughter is. So we will write Aftab is equal to 3 times of his daughter's age, means age. So the put the value Aftab age x + 3 and daughter's age is y + 3. So you will get it is x + 3 equal to 3 into y + 3. So on simplifying we will get this is x + 3 equal to 3 into y, that is 3y, and 3 3s are 9. So you will write +9. Now transpose all the thing to left side. So we will get x minus 3y and minus 9 plus 3. What you will get into right hand side? Nothing, that is 0. तो यहाँ पे क्या किया? 3y को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा. 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा. एंड दिस 3 सेम टू सेम. ओके, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट x minus 3 by minus 9 plus 3, this is minus 6 equal to 0. So dear, this is you will get equation number 2. Okay, so finally you will get 2 equations as here, such as इट इज x minus 7 by, पहला इक्वेशन आपका क्या था? x minus 7 by plus 42 equal to 0. And the second equation you will get here, it is x minus 3 by and minus 6 equal to 0. So this is the system, that is pair of linear equation.
So dear, this is just like that a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and the second equation, this is just into the form a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where a1 equal to 1 and b1 equal to minus 7 and c1 equal to 42, and similarly a2 equal to again 1 and b2 equal to minus 3 and c2 equal to minus 6, and where a1 b1 c1 a2 v2 and c2 are real numbers. So this is their algebraic presentation. The first answer of the question is, this is the algebraic representation. So first part had been completed. Now moving for the graphical part. So what to do for graphical part? We will write from equation number 1. We will start again from equation number 1. We get, and here equation 1 is what? X minus 7y plus 42 equal to 0. So this is the equation number 1. Okay, now we will write this equation such as x equal to माइनस 7. अब आप देखिएगा यहाँ पे हम x या y का कोई एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो देखिए y यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है. हम y को ट्रांसपोज करके पॉजिटिव कर लेते हैं. ठीक है, तो y को ट्रांसपोज करेंगे तो 7y आपका यहाँ राइट हैंड पे आएगा, तो हम उसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं. ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे. यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन सी हियर, इट इज जस्ट लाइक दैट. 7y इक्वल टू लेफ्ट हैंड में अब आपके पास क्या बचेगा? x प्लस 42. ओके, नाउ वी विल राइट दिस एज y इक्वल टू x प्लस 42 एंड डिवाइड बाई 7. You will transpose this 7 to right hand side, so just it will goes to denominator. So let's dear, this is the form. Now we will construct a table such as, अब हम क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे. तो देखिए हमने इस तरह से एक टेबल फॉर्म कर ली. जस्ट यू कैन सी हियर. और इस टेबल में अब हम इस तरह से यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे. ये हमने कॉलम बना लिए. दिस इज x and this one is y. Okay, now we will find the value of x and y. First of all we will put here x इक्वल टू 0. यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दीजिए. तो अगर x की जगह 0 पुट करेंगे, सो वी विल राइट हियर 0. ओके, एंड व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 देन यू विल गेट 42 अपॉन 7. 42 अपॉन 7 मीन्स डियर, दिस इज 7 6 जा 42, सो इट इज 6. After that, now we will put here y equal to 0. Otherwise, x equal to, now we will put here how much? 7. हम यहां पे अब क्या करेंगे? y इक्वल टू 7 पुट करेंगे. देखिए ध्यान से समझना, y इक्वल टू 7 पुट करेंगे तो हमने y की जगह लिखा 7. एंड सी हियर, 7 इक्वल टू x प्लस 42 डिवाइड बाई 7. So this 7 transpose to the left hand side. So it will be 7 into 7. 7 7 जा 49. 49 इक्वल टू x प्लस 42, और 42 को ट्रांसपोज इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 49 माइनस 42. सो व्हाट यू विल गेट? इट इज अगेन 7 ही मिलेगा. तो दो वैल्यू मिल गया. दैट सफिशियंट फॉर ग्राफ. अब हमें इससे हम आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, and what is equation 2 dear? You will get the equation number 2 such as x minus 3 by x minus 3 by minus 6 equal to 0. तो यहां पे फिर से देखेंगे y आपका नेगेटिव है तो हम y को ट्रांसपोज कर देंगे. तो आपको क्या मिलेगा डियर? यस, यू विल गेट जस्ट लाइक दैट
3y equal to x minus 6 or y equal to x minus 6 upon 3. Okay, so this is the situation. Once again we will draw the table. एक बार फिर से हम टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं. तो देखिए टेबल ड्रॉ करेंगे तो क्या सिचुएशन मिलेगी. दिस इज द सिचुएशन. इस तरह से हमने टेबल को ड्रॉ कर लिया. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. और यहां पे हमने इसके 2 कॉलम बना लिए. अब देखिए यहां पे क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. 1 by 1 वैल्यू फाइंड करेंगे. सो डियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट द वैल्यू x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए. सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -6/3. -6/3 मीन्स 3 2 जा 6, तो -2 मिलेगा. आपने x इक्वल टू 0 पुट किया तो आपको वैल्यू मिला -2. इसके बाद अब आप क्या करिए, x इक्वल टू 6 पुट कर दीजिए. यहां पे x इक्वल टू 6 पुट करिए तो 6 - 6 0 हो जाएगा. 0/3 0 ही रहेगा. तो y का वैल्यू 0 मिलेगा जब आप x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 6. So dear, you will get the second table also. Okay, now from these two tables we will draw the graph. अब इन दोनों टेबल के हेल्प से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे. So dear, you can observe how can we draw the graph. So dear, in this graph first of all we will draw axes. So this one is the x-axis. Okay, and so this is x-axis, that is x and x dash, and this one is y-axis. So here we will write y and y dash. Now what to do after this? After this we will present here, mark a number as such. You can see that this is on the x-axis. There are the highest value is 7, so we can write here 2, table of 2, that is the scale of the graph. So we will write as such. You can see that it is 2 and this one is 4 and this one is 6 and next one is 8. So these are the point. Okay, and in the negative direction we will write as, you can see that this is -2 and then -4 and then -6 and it is -8. And on the y-axis also you can see that this is 2 positive and this is the 4 and this is the 6. And in the y-axis negative direction it is -2, this is the -4 and this is the value of -6. Now represent the situations, all the situations for the table number 1. Here we will observe that 0 and 6. Y-axis is 6, positive 6. So we will mark as a dot on the y-axis positive direction. This is the point, means this is the 6. Okay, now 7 and 7. So you will observe that where is 7 on the x-axis. On the x-axis 7 is this one middle point. So you will observe, and y-axis 7 is also this is the middle point. So we will mark a point just here. This is the 7 and 7. So we will mark this point as for the point 7 and 7. ओके, आफ्टर दैट व्हाट टू डू. इसके बाद फिर क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. तो देखिए स्केल से हमने इस पॉइंट्स को ज्वाइन किया. दिस इज द लाइन. Okay, next for second
table we will observe here. This is the second table, the value of 0 and minus 2, 6 and 0. So for the value of x and y is minus 2. So we will mark another point minus 2. As you see on the y-axis, that is negative direction. So this is red point is the shows that minus 2. Okay, and next point is x equal to plus 6 and y equal to 0. So x equal to plus 6 means this is the position. So we will mark the next point. This is the red point, that is x equal to 6. Now again we will take the scale and join these 2 points like that. You will observe that and this situation you can see that the both lines are intersected here. So we can observe that these two lines are for the two equations, and therefore these two lines are intersected at this point of intersection. This is the intersection point. So this representation is known as the graphical representation. As you can see that this is the intersection of two lines. So we can see here this. So this is the graphical representation of your equation, graphical representation of the two lines, that is the system of linear equations. So dear, thank you.